21। आज हम 21 से करेंगे 30 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ dx। ठीक, ऊपर मैंने लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ले सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, यहां पर dx लिख दिया मैंने डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको बेटा कैंसिल कर लीजिए, इट गेट कैंसिल्ड। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx, we have to integrate this. This could be written as integration 1 dx minus integration of cos x dx. Integration of 1 is equals to x. Integration of 1 that is required. So it could be written as x minus integration of cos x. Cos x integration is sin x plus c. This is question number 21. 2, that is integration of sec square x plus cosec square x. So we can write this as sec square x dx plus integration of cosec square x dx. Differentiation of tan x is equals to sec square x. So integration of sec square x, we know the formula sec square x dx. Integration is written as tan x plus c. Differentiation of tan x is equal to sec square x. So integration is like this. Integration of cosec square x dx minus cot x plus c. So this can be written as tan x minus cot x, and constant of this and constant of this get added and becomes constant c. Third is like this. So we can separate sine cube and cos cube. So first I would like to separate them all. Sine cube x divided by sine square x into cos square x dx minus this can be written as cos cube x divided by sine square x into cos square x dx. So here we can write sine x divided by cos x into cos x dx minus cos x divided by sin x into sin x dx. Sin upon cos is equals to 10. So this could be written as tan x, and 1 by cos x is equals to sec x. So this is sec x dx minus cos x upon sin x is equals to cot x. So integration of cot x, and this can be written as cosec x dx. Differentiation of sec x is equal to sec x into tan x. So we know the formula integration of tan x into sec x dx is equals to sec x plus c. Integration of cot x into cosec x, we know that differentiation of cosec x is equals to minus cot x into cosec x. So integration of this could be written as minus cosec x plus c. Reverse process of integration is differentiation. So differentiation of this is like this. So here we can write sec x minus plus, so plus cosec x plus constant of both get added and becomes another constant, that is plus c. So this is the answer, question number 23rd. Again there is a plus sign.
So we can separate both of them. So it could be written as 5 cos cube x dx divided by 2 sin square x into cos square x. We can write this as integration 6 sin cube x divided by 2 sin square x into cos square x dx. Okay. In the second step, what we can do, constant should be taken out, 5 by 2 integration. Here we can write cos x divided by sin x into sin x dx plus 6 by 2 is 3. So 3 is out. Sin x divided by cos x into cos x dx. Cos upon sin is equals to cot, so we can write it as 5 by 2 integration of cot x into 1 by sin is cosec x dx plus 3. This can be written as tan x into sec x dx. Integration of cot x into cosec x is equals to minus cosec x plus c, and integration of this is equals to plus 3 sec x plus c. This is the answer for the question number 24. Is integration of tan x plus cot x ka whole square. So we have to apply the whole square formula, a plus b ka whole square, that is a square plus b square plus 2a into b and dx. So this could be separated and it could be written as tan square x dx plus integration of cot square x dx, and this will get cancelled and it will become plus integration of 2 dx. Tan square x integration. So we know the formula, 1 plus tan square x is equals to sec square x, and tan square x can be written as sec square x minus 1. This can be done. So here we can write sec square x minus 1 dx. In the same way, we also know the formula, 1 plus cot square x dx is equals to cosec square x. So cot square x can be written as cosec square x minus 1. So in the same way we can write cosec square x minus 1 dx plus 2 is the constant, so integration of dx. This can be written as integration sec square x dx minus integration dx plus integration of cosec square x dx minus integration of dx plus 2 integration of dx. It will get cancelled. Differentiation of tan x is equals to sec square x, so integration of sec square x is equals to tan x plus differentiation of cot x is equals to minus cosec square x, so integration of cosec square x is equals to minus cot x plus constant get added and becomes c. This is question number 25. 6 है 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x. जब कभी हम इसे देखेंगे तो कुछ याद आएगा. याद क्या आएगा? cos 2 theta formula can be written as 2 cos square theta minus 1, or it can be written as 1 minus 2 sin square theta. तो देखो ये याद आया, तो यहाँ याद आने के बाद आप लिख सकते हो 2 cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta. ध्यान देने वाली बात, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल है. अब देख बेटा इसको, 1 minus cos 2 theta is equals to
टू साइन स्क्वायर थीटा। याद देना, इधर सिंगल है तो इधर डबल है। So here it can be written as 1 minus cos 2 theta is, so 2 sin square x divided by 2 cos square x, here dx 2 get cancelled and it can be written as tan square x dx, and we know the formula 1 plus tan square x dx is equals to sec square x, and it could be written as tan square x dx equals to sec square x minus 1. So replacing it over here, we get sec square x dx minus integration of dx. Differentiation of tan x is equal to sec square x, so sec square x integration is equals to tan x minus over here we can write x plus constant. इस वॉज क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा सा हमें हिंट मिला है। यहाँ पर इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। इसको ध्यान से देखने के बाद आपको याद आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो भाई यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल है, ठीक, ऐसा हमने देख लिया। तो इस पे अप्लाई करता हूं मैं उस चीज को, तो यहां आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 टाइम्स है तो यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, इसका आधा हो जाएगा 4x का आधा 2x, सो dx। ऊपर वाले को थोड़ा सा घूर के देखिएगा, थोड़ा सा घूरिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इट कुड बी रिटन एज cos 2x डिवाइडेड बाय रूट, और यहां हो गया cos 2x dx, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे कैंसिल कर लिया। Here we get 1 by root 2 is common, integration of dx that is 1 by root 2 into x plus c. Integration of cos square x minus sin square x divided by 1 plus under root of 1 plus cos 4x है। cos 2x का फॉर्मूला है ये, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं लिख लिया cos 2x, और नीचे वाले पे क्या लगाया मैंने 1 प्लस cos 4x था, इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, तो रूट 2 कॉमन, और ये cos 2x ये कैंसिल हो गया तो 1 बाई रूट 2 निकल गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x प्लस c 1/1 माइनस cos x। देखो इसमें भी थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है हमें, तो हमने क्या किया 1 प्लस cos x से ऊपर और 1 प्लस cos x से नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखिए ट्रेंड है ये इंटीग्रेशन का। अब देखिए इट कुड बी रिटन एज 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx, तोड़ के अलग कर दिया मैंने, प्लस लगाया। Here we can write cos x divided by sin x into sin x dx. This can be written as integration of cosec square x dx plus, इसको लिख दिया हमने इंटीग्रेशन में cot x into cosec x dx। tan इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर है, cot इसका डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस, अब देखिए cot x into cosec x है, sec x का डिफरेंशियल sec x into tan x, और cosec x का cosec x into cot x माइनस में। तो यहाँ पर हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस cosec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 29 है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो इसमें भी सेम फॉर्मेट में वही काम करना है, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन का ये सेटिंग है।
सेटिंग मतलब समझ लो ना, इसका सेटिंग है ये। तो देखिए इंटीग्रेशन में मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन में 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग कर दीजिए, जो ये है इसको अलग कर दिए तो हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको तुम लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x dx। tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा tan x प्लस sec x का डिफरेंस sec x इंटू tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30